Good afternoon to all my dear friends, and thank you once again for joining us on this platform. Welcome to yet another session of Brendos WUP. For those who are new to this platform, this is an academic platform where we join together, we do an online monthly meeting, and this is being a breast and endocrine specialty. We discuss the breast and endocrine related cases on alternate basis, where on even months we discuss about breast cases and on odd months we discuss about endocrine cases. Fine. So this program is unique in its own sense because in this program we do a problem based learning. We do a problem based learning. We pick up problem, a clinical problem, we discuss about its detail, and then we put our learning objectives, what we exactly want to learn from this case, and then we do a focused study of that subject so that we can enhance our learning and which reciprocate in our better patient management. Not only that, through this program we provide a comprehensive approach in a patient management. So not only the clinician, a whole set of pupil, be it a clinician, pathologist, radiologist, nuclear medicine physicians, radiation oncologists, whosoever are ever involved in the management of such case, they come on this platform. They put their points. We discuss the original, actual radiological and pathological images so that we have a deeper impact into our mind about how those investigations look. Not only that, the pathologists, radiologists, and others, they also learn about the follow-up of those patients from the clinicians. So this is a comprehensive learning program. Fine. So friends, the wait is over. We in this October month, October being an even month, now we are here again with the breast problem, and without taking much time, I request our moderator. Our moderator, we are blessed to have him. He is none other than Dr. Umang Mittal. Dr. Umang Mittal is one of the top shots endocrine surgeon of Meerut in Western Uttar Pradesh. He has his own name. He is the alumni of LLRM Medical College, Meerut, and Tata Memorial Hospital, Mumbai. Those in Western Uttar Pradesh and Meerut needs no introduction of him. But for those who have joined us from outstation or overseas platform, for them I am introducing him, who is currently practicing as a director and the chief surgeon of at Meerut Cancer Hospital, Meerut, and not only in he has very good hand, surgical hand. He has a gem of heart, both in skill and heart. He's a gem, and I always look at him as an elder brother because he's not only active in his surgical aspect but also in academics and patient support program. And I always adore him, always appreciate him, and I am very blessed to have him on our platform. I always learn from him, and today also with him I will learn a lot that I am very hopeful. So, sir, I request you to please take over. I'm starting your slide. In words, and of course, Sudhi has done the humans work, starting the Brendos system and really helping everyone to understand the recent advances. Am I audible properly? Sir, you are very Because I well think there's audible, some sir. problem with the. Okay, fine. So I took it upon me to change, and of course, welcome Alpa. Alpa and me have been worked together at Hi, Umang. on the platform. So hi Alpa, wherever you are. Hi. So basically, the topic that was actually written was the basic understanding of breast cancer risk assessment tools and utility of Canassist. But what I understand when we talk about breast cancer risk assessment is for a patient who is not a cancer patient, you know, and basically you want to find out whether she is at risk for cancer. So I modified it on my own accord because what we'll be discussing today is the assessment for adjuvant treatment in a patient who already has cancer. And when we talk about adjuvant treatment, basically talking about
whether we can avoid chemotherapy by the use of specific markers in early breast cancer, which are hormone positive. So I think that is what our topic of discussion today is. And next slide, please. Please, the next slide. So basically, I think we all know that breast cancer is a heterogeneous disease, and Perry et al. gave gave us a full chart of the intrinsic subtypes from luminal A, B, HER positive, and TNBC in 2002, and from that time onwards, along with the World Genome Projects, genomics has really come up in a big way, and we understood that simply having the stage system with the TNM was not sufficient to guide us why some patients were still surviving, why patients were not surviving in spite of an early stage. We had IHC things like ERPR, HER, which came in the 90s, and we could understand a bit these receptors or these oncogenes. And if we have treatment for them, they were actually improving it. But even that was not sufficient. We had patients who were ERPR positive and HER negative, but they did not do very well. And up till 90s, often we were talking about all postmenopausal patients who are ERPR positive, HER negative, not to be given chemotherapy, hormone was sufficient. So a lot of things were happening. So, but now as science has gradually progressed, the adjuvant treatment in breast cancer of any stage is guided not just by the clinical pathological factors, but by the immunohistochemistry markers, and today even the scores based on RNA gene assays. So when we talk about what we will be discussing today, we're talking about, of course, TNM staging, which a clinician would talking about the tumor size, the grade, the nodal stages, the intrinsic subtyping, ERPR, HER2, nuclear 7, which is the poor man's guide to using the medicines. We have IHC based profiling based on DNA, which I think Canassist is the most important platform for that. And we have the FDA approved but costly assays, the RNA based genomic assays. And the whole point is that they're still very expensive. Next, please. The next slide, please. So when we talk about genes, basically we talk about genes in terms of finding the hereditary genetic risk, which is BRCA1, BRCA2. Again, this is a DNA testing. We talk about genomic mutations from HER to PIK3, ESR, and that is again a DNA testing. And if I'm correct, Canassist also is doing IHC on the DNA mutations. Am I correct? You're looking at the DNA part. Well, maybe Dr. Savita is going to tell further on that issue. And then we have the tumor DNA expression signatures. A plethora of them, I'm sure we'll be talking about them. Basically, being used in ER positive cancers, which are actually node negative, and where we are looking at whether with these we can avoid giving chemotherapy to our patients. Next, please. Next slide. Next slide, please. So, what is the role of various assays? The assessment is that basically in ERPR positive early breast cancer patients, we might not require chemotherapy because there's a very low risk of disease relapse with endocrine therapy alone. And with chemotherapy, we're actually exposing them to unnecessary treatment and unnecessary adverse effect. So the gene expression profiles have been developed to personalize the treatment of the patients and ensure that adjuvant chemotherapy is given very sparingly to patients who are required. And today we have, at least in the Indian scenario, we are having the IC-based profiling instead of the gene assays. And we have, of course, trials going on. We're looking whether the low-cost system can be equally effective. Next, please. Next slide. So the current ones that are FDA approved as of today, we have the Oncotype DX, which actually is the most commonly used platform all over the world. But I have been using some patients of mine, but it is around 3 lakh rupees for the patient. So it is not a small cost for the patient to give. We have the Mamaprint used very sparingly, has a very small indication, especially after given gene. 50 gene Prosigma is being used in Europe a lot. Endopredict 12 gene is again something which is prognostic, and we have a breast cancer index 7 gene, which is actually coming up, and that is basically being used whether we require a 5-year or a 10-year hormone therapy. So we're going to talk about that. Among all these gene expression assays, the one which has been widely studied
is the oncotype DX with the Taylor study which was there, and it is actually being used as a predictive marker also. That is, that chemotherapy was not effective if given in a particular scenario of patient. So right now that is what the FDA approval is, and they're all very expensive. Next slide, please. So if you look at it, the oncotype DX or the other things, I mean, I'm not going to go into details of that, but basically they have a high level of incidence. And if they show that it's a low risk one, you can actually avoid giving chemotherapy in all of these patients, and again in the BCI index. So this is something based on robust evidence. And again, the problem is that being expensive, a lot of our patients are not able to afford it. Next slide, please. And I think here OncoStem came up with an Indian-based scenario, which has basically five biomarkers. See, on the IC stain, the CD44, ABCC411. Dr. Savita, I'm sure, is going to enumerate further, and has three clinical parameters: tumor size, grade, node status. Well, it is still evolving, but I think there have been studies. Dr. Doval has presented one in ASCO, which is around. It has an 83% concordance with the Taylor's data with the oncotype DX. So at least in the very low scoring, if you have very low scoring Canassist, I believe that we can try to utilize it, the patient support, because the fact is that if a patient is ERPR positive, HER negative, Ki67 low, which is luminal A, then even in luminal A, if you don't have a proper scoring system, you would actually give at least 4 cycles of chemotherapy before you go on to the hormone therapy. With a Canassist, which I think at least my patients are getting it done for 41,000. I've had 4 or 5 patients where I've got it done. And thankfully, they have allowed my patients to just pay 41,000 for this. And thanks, Dr. Savita team, for that. I could have in 3 patients a low score, and I avoided it because those patients would not have been able to afford oncotype DX. So that is what she'll be talking about as to what other robust evidences we have now, what other further the studies have come up, and whether we are planning some more head-to-head studies with the RNA gene assays. Next, please. Next slide, please. So the whole issue today is in our patients, how do we make a judgment whether to use chemo or not in early hormone positive patients. And I'm sure in today's program, our experts are going to help us in deciding that. And with this, I'll welcome a team of experts and speakers. Dr. Savita from the Laboratory Oncostem Diagnostics from Bangalore. Welcome, Dr. Savita, to our city. And I'm sure you're going to teach us a lot. Then, of course, we have Dr. Sudhi, who is the brain behind this program. Dr. Chani Jain, who is a very good oncopathologist from Shastinagar Diagnostic Center, Meerut. Dr. Annie, again a wonderful radiologist from Healthcare Imaging Center, and Dr. Shweta Agarwal, a dynamic radiation oncologist who recently joined Valentis. And I'm sure all of you are going to really give us some good thoughts to chew as you keep on talking about. So I think Dr. Sudhi, I think you'll be starting the whole program, correct? Yeah, thank you very much, sir. And your introduction You'll have to was unmute yourself. You need to unmute yourself. okay. Dr. Sudhi, you need to unmute yourself. Okay. Yeah. So, am I audible now? Yeah, you're audible. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for this introduction. This was very much required, and basically, for those who have now joined, this program is based on the fact that we understand that we don't know much, and we need to know many. How can we improvise ourselves? Because with private practice, it is very difficult. So, especially those who are in private practice and not in academics institutes, they keeping in mind, like, we have designed this program, so we understand that we need to know many things, and that is why we are here to learn about it. So
this program we'll start. We already know the topic, and I'm thankful, sir. I would like to say sorry to all my viewers because of this festive season. We had so many irregularities, and it is basically we it is the breast cancer recurrence risk assessment tool, and because of some technical error, we were not able to print this. And thank you very much for pointing out this. Our ultimate aim to find the recurrence risk assessment in our breast cancer patients. These are our faculties of this session. So we'll start with the case of, she's a 55-year-old postmenopausal lady, multiparous, adequately breastfed to her children, uh, doing very well. Other than that, she felt a right breast painless progressive lump of last 5 months. Otherwise, no other complaints. So Dr. Annie did the mammography. Ma'am, can you share your screen? Some the slides are not visible. Slides are not visible. Okay, I'm sorry. I'm sorry. I have to share this one. Sorry. So the initial case was unremarkable. A postmenopausal lady, around 55-year-old lady, multiparous, adequately breastfed, with a painless progressive lump in her right breast for past 5 to 6 months. So when we did her mammography, Good afternoon, everyone. So the patient came to us for a mammography scan where we can see there's a large irregular lesion which has speculated margins and very few specks of calcifications as well. Then we did the sonography of the same patient. Next slide, please. yes. It was a large, dense lesion which had very much irregular margins, which was a bit deep and posteriorly placed, and it has dense posterior shadowing in it. On vascularity, there was mild vascularity that could be appreciated, or not much of vascularity was there, and no significant lymph nodes were seen in it in this patient. Rest of the breast was otherwise fine, and for the and the left breast was also fine. No significant lesion was seen in the other breast. So this was a solitary lesion, a malignant lesion in her right breast. We did an FNAC. So on FNAC, the slides were fairly cellular and we could see groups of malignant cells which were showing mild to moderate pleomorphism and brown nuclei, hyperchromatic nucleus. So we labeled it as a ductal carcinoma. So now that she was a diagnosed case of a breast cancer, as a protocol, we always ask for a whole body FDG PET scan, which we also did her in her case. And her scan was unremarkable, except for that she had an hyperactive lesion in her right breast and a right axillary lymph node. Therefore, she was labeled as a case of a right-sided breast cancer with a clinical staging of T2N1M0. We discussed the case with her, with the patient and the relatives. The patient was more keen for mastectomy, so we did a modified radical mastectomy in her case. Intraoperatively also, there was only 3 into 3 centimeter malignant lump in the upper inner quadrant. Otherwise, there was some subsymptomatic lymph nodes in a right axilla, and otherwise the other findings were unremarkable. We sent the draws for the histopathological examination. So on cross examination, on sectioning the MRM specimen, we found a grey-white mass which measured 4 into 3.5 by 3 centimeters, and multiple lymph nodes were also isolated with varied in size from 0.2 centimeters to 1.5 centimeters. Next slide now. So on microscopic examination of the mass, as we can see in the first photomicrograph, there were infiltration by tumor cells in the form of cords and tubules. And if we see on high pass, there was mild pleomorphism, and the chromatin was open,
and there was moderate cytoplasm. Further, ma'am, next slide. On examination of lymph node, one of the lymph node was positive, and if it is appreciable in the photomicrograph, we can see the capsule of the lymph node and the tumor cells are extending in the perinodal fat. In the lower part of the image is the perinodal fat where we can see the tumor cells extending beyond the lymph node. So there was extranodal extension also. Next slide. Further immunohistochemistry was done. So estrogen receptor showed positivity with Aldred score 7/8. Progesterone receptor, there was very weakly positive in 1 to 10% of cells only. So Aldred score was 2/8. Next slide. HER2 was totally negative and Ki67 index was approximately 15 to 20% of cells showed nuclear positivity. So now the pathological staging was T2, N1A, M0. So the question came about her adjuvant therapy. So she was ER positive. Her adjuvant hormone therapy was fixed. But what about the radiation therapy? Was with one lymph node? Is it required or not? How many nodes were positive? How many nodes were positive? One lymph node was positive with extranodal extension. Okay. And or what about the chemotherapy? This patient seems to be like a low risk patient. So is the chemotherapy really required or not? For that, we took an opinion from the medical and the radiation oncologist, and they asked for a Canassist. This was the first time I encountered this investigation, and in her case, the score was 11.2, which was below the cutoff 15.5, and with the 5-year probability of distant recurrence with hormone therapy alone 6%. Fine. So we took an opinion from the radiation therapist oncologist regarding the radiotherapy also. So, in view of node positivity, that one lymph node out of 6 lymph nodes was positive and the size was 1 centimeter, it also had extracapsular extension along with LVI. So, the patient was advised for adjuvant radiotherapy to the chest wall and the regional lymph nodes. Can I just make a statement before we start the thing? This patient has an extra nodal spread and node was positive. What was her age? She was 55 years post-menopause. I mean, so basically, I would say that at least if you just have a Canassist, I mean, even with the oncotype DX, this was a patient where you would actually be a little bit careful, an extra capsular spread. Sir, I think Dr. Savita is going to talk about it, but I would just say that I would have preferred to give some chemotherapy. Anyway, let's proceed. We will discuss about it. Actually, we will discuss about the whole case, how this whole knowledge applies to this case. So after the presentations, we can put our points, and later on we will have a thorough discussion about how the existing knowledge we can apply on this case. Everything we will discuss. Fine. So basically, the learning. Dr. Shweta was saying something when I just disturbed her. Yeah, so the patient was advised adjuvant radiotherapy or in view of the extranodal, especially the extranodal extension and lymphovascular invasion by the radiation oncologist. So why we put this case in this forum? Because this was the first time that as a clinician I encountered about Canassist. There is another tool which we can use to identify which patient we can skip giving chemotherapy or which patient we can not even we cannot avoid chemotherapy. So out of curiosity, we wanted to learn the basic understanding of the breast cancer recurrence risk assessment tools, then the role of Canassist, because it is the test which is readily available to us. So what is its real role in deciding the adjuvant systemic therapies in breast cancer? What are the various indications, contraindications? In fact, the whole knowledge about the practical knowledge of Canassist we wanted to understand through this forum. What are the possibilities and limitations? Because there was a time, we all know, that blanket treatment was given to all the breast cancers. But with the gradual understanding of the molecular and the biological markers like ER, PR, HER2, and many other markers, now the systemic
treatment is strategies is significantly changed. Now, blanket treatment is not at all advocated. Also, with the early diagnosis of cancer, less radical and harsh therapies are required. Each cancer, breast cancer, behaves differently. It depends upon the stage of the presentation, the molecular markers, age of the patient, genetic susceptibilities, and many other factors. And so also the risk of recurrence. So the risk of recurrence is not same in all patients. We all know the chemotherapy is not an easy task. So many complications they come to the patient. It is a different thing that with happy faces they endure all the complications, they come out of it so strongly, but it is not something which everyone desires. There is always a range. We know that there are certain luminal type A sort of cancers where we can very well avoid chemotherapy. We know there are certain subset of patients where we know that we have to give chemotherapy. We cannot do without it. But there is a range of patients. There is a range of patients where it is something we need to balance whether the complications, the morbidity of chemotherapy is more beneficial or avoiding chemotherapy is more beneficial. So here we need a help of some tool. What is that tool? I request Dr. Savita to please elaborate about it so that we can be enlightened with this knowledge. Thank you very much. I am stopping my share and I request Dr. Savita may now start sharing her screen. Yes, I will get started. Just give me a second. Are you able to hear me and see my screen? Yes, you are very well audible. Okay. Very good afternoon. Firstly, I'd like to thank all of you for giving me this wonderful opportunity to share the platform and talk about our Canassist breast test. And it's a real honor to be here with all the eminent clinicians. We are the ones who are dealing with the patient all the time. So मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी opportunity है कि मैं भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ इसके बारे में. Today we'll be talking about utility of Canassist breast in Indian scenario. I will also be covering prognostication of the risk assessment tools which are available for early breast cancer. We'll just get started. So I think how do we treat ERPR positive or hormone receptor positive HER2 negative early breast cancer? Traditionally हमको सब लोग TNM ग्रेडिंग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, सब दैट इज रिमेन्स द बेसलाइन, चलता ही है, सभी लोग यूज करते हैं. उसके बाद में बायोमार्कर्स आए, ERPR HER2. आई थिंक डॉक्टर मित्तल also spoke about it in detail and he's helped us understand all the other tools also. I'll also be touching on that, but I think just building up on what he said already, ERPR HER2 and K67 उनसे भी बहुत फायदा होता है, हमको पता चलता है कि how to treat the patient exactly. उसके बाद आए all this online tools which are like HC4 or luminal classifications. उसके बाद में जो era है वो multi gene test का era है, genomic led tests जो है they have been leading the fray with सब इनका सबका गोल एक ही था कि आइडेंटिफाई करो उन पेशेंट्स को जिनमें कीमोथेरेपी की जरूरत है यूजिंग प्रिसिशन मेडिसिन. So this will help us to reduce both the financial and the physiological toxicity. So क्या है, what are the prognostic tests? हम सबको पता है prognostic test वो टेस्ट है जो कि हमको अलाउ करते हैं पता लगाने के लिए कि what is the chance of cancer recurrence, जिसकी वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी देने से फायदा है कि नहीं है. ऑन्कोटाइप, BX एंड मामा प्रिंट ये बिल्कुल काफी साल से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 साल से है, यूएस और यूरोप में डेवलप हुए, काफी वाइडली अडॉप्टेड है. इतने वाइडली अडॉप्टेड है कि वो उनकी कंट्री के नेशनल गाइडलाइंस वेदर NCCN, एस्पो, नाइस या एस्को इंटरनेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के भी पार्ट है. एंड इससे जो वहां के पेशेंट्स हैं उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में बहुत फायदा हुआ है, बहुत कीमोथेरेपी का यूज बहुत रिड्यूस हुआ है. सो टिपिकली जो पेशेंट हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव HER2 पॉजिटिव अर्ली ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होता है, उसका पहला ट्रीटमेंट होता है सर्जरी. सर्जरी के बाद वो पेशेंट जो है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाता है. प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होने से जैसे अराउंड 70% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो लो रिस्क ऑफ रिकरेंस आते हैं. इन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है.
और अराउंड 30% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं. इन पेशेंट में कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको कीमोथेरेपी से फायदा होता है. इसमें हम बाद में और भी बात करेंगे कि सारे टेस्ट क्या एक ही तरह से बिहेव करते हैं सारे एथनिसिटीज में कि नहीं. विल डिस्कस अबाउट दिस अ लिटिल बिट लेटर. हमको भी पता है बहुत अच्छे से कि इंडियन पेशेंट्स और वेस्टर्न पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं और उनका जैसा भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है उसमें बहुत फर्क होता है. हमारे इंडियन पेशेंट्स जो होते हैं काफी यंगर एज पे प्रेजेंट करते हैं. 48 हमारा मीडियम एज है, विच इज ऑलमोस्ट डिकेड अर्लियर देन द वेस्टर्न वुमेन. और हमारा जो होता है ज्यादा सिम्टोमेटिक डिटेक्शन होता है, मतलब लंप से पेशेंट आता है हमारे पास. स्टेज 2 पेशेंट्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा बड़े ट्यूमर्स होते हैं, काफी सारे पेशेंट्स नोड पॉजिटिव भी होते हैं. जबकि वेस्ट में जो होता है you see more of older women, mostly सब postmenopausal होते हैं. They have smaller tumors, primarily node negative tumors होते हैं. और ये सारे वहां पे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट ड्रिवन स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स वगैरह है, ये इंश्योरेंस प्रोग्राम्स है, बहुत सालों से चल रहे हैं. तो ये लोग स्क्रीन बेस्ड डिटेक्टेड होते हैं, तो स्मॉलर केसेस, स्टेज 1 केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं. तो हम देखते हैं ज्यादा यंगर पेशेंट्स. We see more patients with node positive grade 3 and also we see patients with higher Ki-67. सो हमको जरूरत है ऐसे टेस्ट की जो हमारे पेशेंट्स के लिए सूटेबल हो. सो इस नीड के साथ ऑन्कोस्टेम डायग्नोस्टिक्स को स्टार्ट किया डॉक्टर मंजरी बाकरे ने. शी इज अ अवार्ड विनिंग सेल बायोलॉजिस्ट and she used her knowledge as a cell biologist and her vast experience to set up OncoStem diagnostics, and Canassist breast was developed. So it was developed in the Asian patients. इसका जो टेक्नोलॉजी है वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, विच इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी. 5 बायोमार्कर्स हैं जो कि क्रिटिकल सिग्नलिंग पाथवेज ऑफ ट्यूमर रिकरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इन बायोमार्कर्स का ग्रेडिंग और मॉर्फोमेट्रिक पैरामीटर्स जो जैसे कि ट्यूमर साइज, ग्रेड और नोड स्टेटस, इसका जो इनपुट है वो हमारा प्रोप्राइटरी मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम में डाला जाता है. फिर एक कैनेसिस्ट ब्रेस्ट रिस्क स्कोर जनरेट होता है. ये रिस्क स्कोर जो होता है 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है. 15.5 से कट ऑफ, 15.5 से नीचे है तो लो रिस्क है. तो दीज आर द पेशेंट्स जो टिपिकली 70% के आसपास पेशेंट्स होते हैं जिनमें आप सेफली कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं. और 15.6 एंड अबव है तो ये पेशेंट होते हैं हाई रिस्क. ये वो पेशेंट्स है जिनमें कीमोथेरेपी देने से फायदा है. कैनेसिस ब्रेस्ट का वैलिडेशन जो है 4000 प्लस पेशेंट्स पे हो चुका है. इंडिया, यूएस, यूरोप सब जगह के पेशेंट्स हैं इसमें. और अभी तक का हमारा जो डाटा है वो उसमें शो करता है कि हमारा नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू 95% है, विच इज very accurate, and that is comparable to that of the Western test. And as already mentioned by Dr. Mittal, it is at a fraction of the cost of the Western test. So हमारे बायोमार्कर्स जो हैं उसका पेटेंट जो है बहुत सारे कंट्रीज में ग्रांटेड है. हमारे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में अवेलेबल है. So क्या है जो बायोमार्कर्स जो हम यूज करते हैं? क्या ये ERPR, HER2/neu और Ki-67 है? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम लोग ERPR, HER2/neu, Ki-67 का डाटा सिर्फ एक्सेप्टेबल है कि नहीं पेशेंट टेस्टिंग के लिए, उसके लिए हम पूछते हैं. बट एक्चुअली जो हमारे जो मार्कर्स हैं वो बिल्कुल अलग मार्कर्स हैं. ये मार्कर्स जो होते हैं कैंसर प्रोग्रेशन के इवेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जो ब्रेस्ट में होता है, वो क्या चीज होती है जिससे कि वो फाइनली जाके एक डिस्टेंस मेटास्टेसिस फॉर्म करता है. उसके लिए बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन होता है, फिर सेल टू सेल एडिशन लॉस होता है, जैसे कि सेल्स डिसोसिएटेड हो जाते हैं, फिर वो वैस्कुलेचर इन्वेड करते हैं, फिर वो एक्स्ट्रावेसेट करते हैं, फिर वो मेसेंकाइमल एपिथेलियल ट्रांजिशन होके और साथ में कीमोथेरेपी रेजिस्टेंस वगैरह हो जाता है. फिर डिस्टेंस मेटास्टेसिस होता है, वेदर लंग में हो, ब्रेन में हो या बोन मैरो में हो. तो इसमें जब ये टेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो जो वेरियस इवेंट्स इन कैंसर प्रोग्रेशन है उसके 40 बायोमार्कर्स को स्टडी किया. और ये जो 5 बायोमार्कर्स है CD44, एन-कैडरिन, पैन-कैडरिन और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ABCC4 एंड 11, इनको सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पाया गया पता लगाने में कि रिस्क ऑफ रिकरेंस कैसा है. ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैंसर प्रोग्रेशन इवेंट्स में पार्ट लेते हैं. इसकी वजह से इनका रोल है in identifying which are the low risk and which are the high risk cases. ये हमारा डेवलपमेंट का पेपर है, ये अवेलेबल है बायोमार्कर इनसाइट पे. हमारा जो टूल है
इट इज अ प्रोटियोमिक क्लासिफायर. सो जो एक आई थिंक डॉक्टर मित्तल ने एक सवाल किया था कि डीएनए बेस्ड, नहीं सर, एक्चुअली इवेंचुअली डीएनए जाके ट्रांसलेट होकर आरएनए बनता है, आरएनए जाके प्रोटीन बनाता है. प्रोटीन जो होता है वो फाइनल इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, वही है जो सेल में सारा काम करता है. सो हमारा जो है प्रोटियोमिक क्लासिफायर वो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है. और आईएचसी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जो बहुत सालों से हमारे, आई थिंक इट्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑन्कोलॉजी. एनी कैंसर दैट गेट्स डिटेक्टेड डेफिनेटली हम आईएचसी करते हैं पता लगाने के लिए. कभी कभी कहाँ का कैंसर है पता लगाने के लिए भी करते हैं, कभी कभी प्रोग्नोसिस के लिए करते हैं, कभी कभी टारगेटेड ट्रीटमेंट के लिए भी करते हैं. सो हम वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. जो बायोमार्कर से हमको जो ग्रेडिंग्स मिलता है उनको, और जो क्लिनिकल पैरामीटर्स जो मैंने मेंशन किया पहले, उनको हम सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम में डालते हैं. तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हमने स्टडी किया और ये मेथड को बेस्ट पाया गया. उसके इसका जो पब्लिकेशन पेपर है वो अवेलेबल है. और कोई भी टेस्ट अच्छे से काम करता है कि नहीं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका एनालिटिकल वैलिडेशन तरीके से होना चाहिए. हम लोग ई गैप और CLSI और कैप गाइडलाइंस फॉलो करके हमने पूरा वैलिडेशन किया है. इसमें स्पेसिफिकली देखने के लिए कि भले कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी ऑब्जर्वर हो, या कोई भी डे पे रन हुआ हो, वो टेस्ट से सिमिलर तरीके से काम करना चाहिए. सो इसका जो पब्लिकेशन है वो भी अवेलेबल है. और हमने कैनासिस्ट ब्रेस्ट को ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म पे भी वैलिडेट किया है और टिश्यू माइक्रो एरे में भी वैलिडेट किया है. ये सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं. और जो कोई भी हम टेस्ट करते हैं क्लिनिकल पेशेंट्स में वो कैसा काम करता है, ये बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअल पेशेंट्स में हाउ डज दिस टेस्ट वर्क. इसके लिए क्लिनिकल वैलिडेशन बहुत ही जरूरी है. और इसके लिए बहुत सारा काम किया है कैनासिस्ट ब्रेस्ट पे और बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अवेलेबल भी हैं. मैं बाद में आपको एंड पे सारे पब्लिकेशंस का लिंक भी शेयर करूंगी. और इन सारी पब्लिकेशंस से जो डाटा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगी. मैं बहुत सारा डाटा नहीं कवर करूंगी, आपको मैं कोशिश करूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूं मैं. सो कैनासिस्ट ब्रेस्ट जनरेट्स एक्शनेबल रिस्क ग्रुप्स. So when we look at all the patient, अभी हम सारे KM curves देखेंगे, which is Kaplan-Meier survival graphs. इसमें जो है x axis पे है months है और distance metastasis free survival y axis पे है. So जो सारे पेशेंट जिनको कीमो एंडोक्राइन थेरेपी मिला है उनको जब हम एनालाइज करते हैं और कैनासिस्ट ब्रेस्ट में से 69% पेशेंट्स हैव बीन गिवन एज लो रिस्क इन दिस. एंड इनका जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस फ्री सर्वाइवल है 94% है, which is way better than that of the high risk patient survival, which is at 82%. और यहाँ पे आप देख सकते हैं the p value is clinically statistically significant. अभी एक सवाल उठता है कि अच्छा ये इन पेशेंट्स को तो ऑलरेडी कीमोथेरेपी भी मिला है तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट में कुछ इफेक्ट होगा क्या करके. तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमने सिर्फ जो पेशेंट को सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी मिला है उनको हमने एग्जामिन किया. उसमें हमने क्या देखा, उसमें भी कैनासिस्ट ब्रेस्ट जो है 19% ऑफ पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करता है हाई रिस्क, जिनका पुअरर सर्वाइवल है 84% पे. जबकि जो लो रिस्क वाले पेशेंट है, विच इज 81% ऑफ द पेशेंट्स, उनका मच बेटर सर्वाइवल है 95%. अगेन क्लिनिकली एंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सेग्रीगेशन. सो कैनासिस्ट ब्रेस्ट शोज दैट इट इज unaffected by chemotherapy and the NPV is above 94%. नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू मतलब हमारा टेस्ट बोल रहा है कि ये लो रिस्क है और उस पेशेंट को लो रिस्क के हिसाब से हार्मोन थेरेपी ही मिला है और उसका सर्वाइवल कैसा रहा है एट द एंड ऑफ 5 years. सो दैट इज व्हाट इज नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. सो अगेन वी लुक्ड एट कैनासिस्ट ब्रेस्ट स्ट्रैटिफिकेशन इन डिफरेंट एजेस. सो अंडर और इक्वल टू 50 years and above 50 years. So what we saw is that whether it is equal to or more than 50 years, the proportions are somewhat similar. मतलब low risk के जो patients है 70% है, high risk के 30% है और survival difference भी significant है. Low risk patient का better survival है 93% as against the high risk which is at 79% survival. Same way in the 50 years what we see is again high risk का survival poorer है 84%, low risk का much better है 94.4%. सो ये बताता है हमको कि कैनासिस्ट ब्रेस्ट जो है वो लेस देन 50 एंड मोर देन 50 दोनों एज ग्रुप में काफी यूजफुल है एंड प्रोपोर्शंस और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कंटिन्यूज टू बी अबव 93%. अगेन एज भी हमारे सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है. वी सी मोर ऑफ यंग पेशेंट्स. सेम वे व्हाट आई सेड, हमको ज्यादा नोड पॉजिटिव पेशेंट्स भी दिखते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए हम नोड पॉजिटिव और नोड नेगेटिव पेशेंट्स में
कैनासिस्ट सर्टिफिकेशन कैसा काम करता है। सो जब हम सारे नोड नेगेटिव पेशेंट्स को एनालाइज करते हैं, ये जो 1700 प्लस पेशेंट्स हैं, इसमें लो रिस्क पेशेंट्स है 82%, उनका सर्वाइवल बेटर है 95% पे, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स है विच इज अराउंड 18% ऑफ द पेशेंट्स, उनका पूरा सर्वाइवल है 88%। सेम थिंग व्हाट वी सी नोड पॉजिटिव पेशेंट्स में भी almost every other patient, which is like 49% of the patients are at high risk, 51% of the patients are at, the proportion of patients are at low risk. Or again, you can see that survival difference is quite significant and it was statistically significant. So every second node positive patient can be of low risk. So automatically हम presume नहीं कर सकते हैं कि node positive है तो patient high risk पे ही होगा करके। और दोनों ग्रुप्स में Canassist Plus बहुत अच्छे से काम करता है, NPV is more than 92%. So, एक सवाल आता है कि क्लिनिकली हम लो रिस्क सोचते हैं पेशेंट्स को कि हाँ क्लिनिकली जो भी छोटा ट्यूमर है, नोड नेगेटिव है या Ki-67 लो है या और भी जो भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी ही देना है। उन पेशेंट्स को जब हम एग्जामिन करते हैं, सो जब हमने देखा T1N0 पेशेंट्स, उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये वाले जो टिपिकली जो पेशेंट्स हैं जिसको आप क्लिनिकली लो रिस्क समझ के आप कीमोथेरेपी नहीं देते, इनमें भी कैनासिस्ट ब्रेस्ट जो है 7% पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करता है एज हाई रिस्क। इनका देखिए मच पुअरर सर्वाइवल एट 85 एज अगेंस्ट एन एक्सेलेंट सर्वाइवल ऑफ 97 ऑफ द लो रिस्क पेशेंट। सेम वे T1 T2 नोड नेगेटिव में भी 9% ऑफ द पेशेंट्स हाई रिस्क में जिनका मच पुअरर सर्वाइवल एट 85%। सो आपको लगता है कि हाँ क्लिनिकली लो रिस्क पेशेंट है, इसमें तो कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, इन पेशेंट्स में भी एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी से बहुत फायदा होगा, उनको आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। अभी आते हैं हम कैनासिस्ट ब्रेस्ट का कीमोथेरेपी बेनिफिट सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट्स में है क्या वो देखने के लिए। टू सी दिस वी सॉ द डाटा इन अ डिफरेंट वे। सारे पेशेंट्स जिनको लो रिस्क बताया गया था कैनासिस्ट से, उनको हमने कंपेयर किया और देखा कि उनको क्या ट्रीटमेंट मिला है। सो जिनको कीमो एंडोक्राइन थेरेपी मिला है वो है ब्लू लाइन, और जिनको एंडोक्राइन थेरेपी मिला है वो है रेड लाइन। जैसे आपको दिख रहा है ये सारे दोनों लाइन सुपर इम्पोजिंग है और इनका डिस्टेंस मेटास्टेसिस फ्री सर्वाइवल भी सेम है। तो इसका ये मतलब है कि यदि कैनासिस्ट ब्रेस्ट यदि लो रिस्क बुलाता है किसी पेशेंट को, तो आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कीमो एंडोक्राइन थेरेपी दे रहे हैं या सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी दे रहे हैं, सर्वाइवल पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। जबकि जब हम हाई रिस्क पेशेंट्स देख रहे हैं, तो जब जो पेशेंट जो एंडोक्राइन थेरेपी मिला है उसमें जो देख रहे हैं, जिनको सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी मिला है, जिनको बट कैनासिस्ट ने हाई रिस्क बोला, उनका सर्वाइवल देखिए बहुत गिर गया है 79% पे। जबकि जिन पेशेंट्स को हाई रिस्क कैनासिस्ट ने बोला है और उनको कीमोथेरेपी भी मिला है, उनमें सर्वाइवल इंप्रूव्ड है 93%। ये 14% का जो डिफरेंस है ये इंडिकेट करता है कि कैनासिस्ट ब्रेस्ट हाई रिस्क पेशेंट्स बेनिफिट फ्रॉम कीमोथेरेपी। सो this is very important. This is helpful in identifying both the low risk and the high risk patients in a very significant manner. So जब कैनासिस्ट ब्रेस्ट डॉक्टर मंजरी ने स्टार्ट किया था, उनका विजन था कि टेस्ट को हमको इंडिया में डेवलप करना चाहिए ताकि हमारे पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो, विद इन रीच हो, हमारे पेशेंट्स उससे फायदा उठा सके, और हर चीज के लिए हमको एक्सपेंसिव वेस्टर्न टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते करके नहीं सोचना पड़े। बट तभी भी उनका बिल्कुल ये विजन बहुत क्लियर था कि सारे जो भी वर्ल्ड में पेशेंट्स हैं जो भी इस टेस्ट से बेनिफिट करना चाहते हैं, सबको अवेलेबल होना चाहिए ये टेस्ट। और इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज में कैनासिस्ट ब्रेस्ट ने एंगेज किया है। इंडिया के बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ हुआ है, यूरोप के सेंटर्स से हुआ है, यूएस के सेंटर से हुआ है, और इन सब में जो डाटा हमने देखा है उसमें देखा है कि कैनासिस्ट ब्रेस्ट जो है इक्वल एक्यूरेसी के साथ डिफरेंट एथनिसिटीज में भी काम करता है। ये हमारा रिसेंट पब्लिकेशन था ऑफ कैनासिस्ट ब्रेस्ट इन यूरोप, एक रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन ऑफ यूरोपियन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स था। इसमें उसने प्रूव किया है कि कैनासिस्ट ब्रेस्ट जो है इज अ वेरी रोबस्ट एंड इट फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ एथनिक डिफरेंसेस एंड इट कैन हेल्प प्रिवेंट ओवर ट्रीटमेंट एंड अंडर ट्रीटमेंट इन अ ग्रेटर नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना सारा जो पेशेंट्स है, जो इंडियन पेशेंट्स है और कॉकेशियन पेशेंट्स हैं, उनको सेपरेटली एनालाइज किया। ये हमारा जो इंडियन सब कोहॉर्ट है उसमें हमारे दो पेशेंट्स है, दो सेट ऑफ पेशेंट्स है, एक कीमो एंडोक्राइन थेरेपी और एक जिनको सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी मिला। सो अभी कॉकेशियन में भी सिमिलर वे। सो वेदर पेशेंट इंडियन है या कॉकेशियन है, इफ दे हैव गॉट कीमो एंडोक्राइन थेरेपी, हम प्रोपोर्शन समवट सिमिलर दिख रहे हैं, इज 70 to 73 एंड 27-28 of high risk patients.
अगेन सिग्निफिकेंट सेग्रीगेशन है पेशेंट्स का, और हम देख रहे हैं कि उनका सर्वाइवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 94-95 वर्सेस 83-85, whereas the same way whether it is Indian सबकॉट ऑफ पेशेंट्स और कोकेशियन सबकॉट ऑफ पेशेंट जिनको सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी मिला है, उसमें प्रोपोर्शंस करीबन 80-20 के हिसाब से 78-81 ईयर और 19-22 ईयर, and survival also what you can see is a 94-97%, and high risk survival is poorer at 83-84%. So it shows that Canassist breast की accuracy both Indian and Caucasian patients में similar है. So अभी मैं थोड़ा कवर करूंगी सारे जो दूसरे जो टूल्स हैं उन सब के बारे में बहुत ब्रीफली. दिस वर्क हैज बीन मेड वेरी इजी बाय डॉक्टर मित्तल. उन्होंने काफी डिटेल में सारे टूल्स के बारे में बताया भी है. मैं भी इसको ब्रीफली टच करूंगी. ऑनलाइन टूल्स बहुत पॉपुलर है, फ्रीली अवेलेबल है, वेदर एडजुवेंट ऑनलाइन है, प्रेडिक्ट है, एनपीआई है, HC4 है, ये बिकॉज दे आर फ्री, बहुत वाइडली यूज करते हैं डॉक्टर्स. उसके बाद आए जो फर्स्ट जनरेशन टेस्ट है जिसमें मामा प्रिंट आता है विच इज बाय एजेंडिया, and Oncotype DX, which is by Genomic Health. These are the most popular ones. They've been there in the market for very long. They have prospective studies also available. Then came the second generation test. काफी सारे सेकेंड जनरेशन टेस्ट में क्लिनिकल पैरामीटर्स को भी यूज करते हैं, वेदर इट इज एंडोप्रेडिक्ट और प्रोसिग्ना, ये अवेलेबल है. एंड उसके बाद है कैंसस ब्रेस्ट विच इज अ प्रोटियोमिक क्लासिफायर विच इज अ IHC बेस्ड टेस्ट. सो जो ऑनलाइन डाटा जो जिन टूल्स पे बिल्ड हुआ है, डाटा ही पूरा कॉकेशियन है, काफी सारे पूरे पोस्ट मेनोपॉजल है, वेदर एडजुवेंट ऑनलाइन जो कि सीआर डाटाबेस पे है, प्रेडिक्ट जो कि अगेन पेशेंट प्रोडोमिनेंटली पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स इन यूके से है, एनपीआई अगेन नॉटिंघम ब्रेस्ट कैंसर स्टडी यूके का है, HC4 अगेन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन फ्रॉम यूएसए एंड यूरोप है. सो ये सारे कॉकेशियन पेशेंट्स पे डेवलप हुए. तो इनका जो चैलेंजेस है, देयर इज अंडरएस्टिमेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ कीमोथेरेपी इन पेशेंट्स विद स्मॉल बायोलॉजिकली एग्रेसिव ट्यूमर्स. Also there is overestimation of survival in younger women, especially less than 50 and premenopausal. Because of this, there is lack of standardization in the clinical utility, और उनका different populations में generalizability थोड़ा poor है इसकी वजह से. इसके बारे में काफी सारे publications available हैं कि Asian patients में specifically ये online tools जो हैं suboptimally perform करते हैं. ये adjuvant online it shows it is over optimistic in predicting survival in Asian breast cancer patients. Also जो predicts जो है इसमें भी आया है कि it significantly overestimates survival in young patients who are less than 40 years of age. Same way there is a publication from Korea saying that adjuvant online is not suitable in Korean patients. So इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो कैनासिस्ट ब्रेस्ट को जो है सारे डिफरेंट टूल्स जो भी फ्रीली अवेलेबल है उनके साथ हमने कंपेयर किया है. तो सबसे पहले हम आएंगे K67 बेस्ड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन पे. एज यू ऑल नो K67 काफी पॉपुलर IHC है जो सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में होता है. एंड सेंट गैलन दिस ईयर सेंट गैलेंस it has come up with a new recommendation saying that K67 less than 5% है तो इन पेशेंट्स को लो रिस्क कंसिडर किया जाए एंड दे नीड नॉट बी गिवन कीमोथेरेपी. और जिनका K67 मोर देन 30% है उनको हाई रिस्क कंसिडर किया जाए एंड दे बी गिवन कीमोथेरेपी. एंड जो इंटरमीडिएट रेंज है which is 6 to 29%, उनमें it recommends the use of genomic testing. So हमने हमारे जो पेशेंट्स जिनका K67 है उसको हमने एनालाइज किया. This is 1700 plus patients. What we see is this, 50% of the patients are getting categorized as low risk. Some 36%, which is a fairly big number, are categorized as intermediate risk. Now this is that bracket in which you would be probably, according to the St. Gallen's recommendation, you should be doing genomic testing. Same way, जो हमारे हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं सिर्फ 14% ऑफ द पेशेंट्स को उसने हाई रिस्क करके आइडेंटिफाई किया है. और आप देख रहे हैं सर्वाइवल में डिफरेंस जो है 7-8% है, बहुत ज्यादा नहीं है. जो वेदर इट इज लो रिस्क इंटरमीडिएट रिस्क there is hardly any difference, and between high risk and low risk also the difference in survival is around 7%. Same patients को जब हमने Canassist breast से टेस्ट किया, so what we see is a very clear dichotomous segregation into low risk and high risk. 75% of the patient low risk करके categorize हुए हैं जिनका survival better है 95%,
और जो 25% जो हाई रिस्क करके जो कैटेगराइज हुए उनका सर्वाइवल पुअर है 82%। आप देखेंगे कि सर्वाइवल डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, इट्स अराउंड 13% एज अगेंस्ट द 7-8% हियर। सो एंड बिकॉज ऑफ द सेम गैलेंस रिकमेंडेशन हमने क्या किया, ये जो इंटरमीडिएट कैटेगरी उसको भी हमने फिर से एनालाइज किया। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 74% of these patients are getting categorized as low risk, which have a similar survival of 95%, and high risk patients, which is around 26% of the patients, which have a survival of 84%. So Canassist ज्यादा पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है एज लो रिस्क, और उनका जो सर्वाइवल बेनिफिट का जो डिफरेंस है वो भी बहुत अच्छा है। तो वो दिखाता है कि काई 67 से ज्यादा अच्छा टूल है, और इसमें एनपीवी भी इट इज अबाउट अराउंड 95%। हमारा रिसेंट एक पब्लिकेशन है विच इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रिकरेंस रिस्क प्रेडिक्शंस इन ईआर पॉजिटिव HER2 नेगेटिव अर्ली ब्रेस्ट कैंसर विद द ऑल द अदर ऑनलाइन टूल्स। मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करूंगी बिकॉज ये टूल्स बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं इसको कवर करना चाहूंगी। सो Canassist जो होता है ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाता है एज लो रिस्क, एज यू आर सीइंग हियर T1 ट्यूमर्स में आप देख रहे हैं कि Canassist 84% ऑफ द पेशेंट्स को लो रिस्क करके आइडेंटिफाई करता है, एनपीआई अराउंड 70% को आइडेंटिफाई करता है। काफी सारे पेशेंट्स को मॉडरेट प्रोग्नोस्टिक ग्रुप में भी डालता है, और हार्डली एनी पेशेंट्स इज आइडेंटिफाइंग एज हाई रिस्क इन द स्मॉलर ट्यूमर्स। और N0 वाले पेशेंट्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि Canassist 86% को आइडेंटिफाई कर रहा है एज लो रिस्क, जबकि एनपीआई जो ओनली आइडेंटिफाइंग 56% ऑफ द पेशेंट्स एज लो रिस्क, बाकी सबको वो इंटरमीडिएट या मॉडरेट प्रोग्नोस्टिक ग्रुप कैटेगरी में डाल रहा है। N1 पेशेंट्स में भी Canassist is able to identify 56% of the patients as low risk, whereas NPI is calling only 6% of those patients as low risk. Everything else is going under moderate prognostic group where आपको decision making में कोई फायदा नहीं होगा। सेम वे ग्रेड 2 ट्यूमर जो कि काफी सारे ट्यूमर्स होते हैं उसमें भी वीसी की बहुत कम पेशेंट्स जो है एनपीआई यूज करके उनको गुड प्रोग्नोस्टिक ग्रुप में डाला जाता है। सो इसमें it is helpful, it is able to identify more number of patients, and it's a dichotomous segregation, so there is no decision making impact. So हमने क्लिनिकल आउटकम कंपैरिजन भी किया एनपीआई Canassist और प्रेडिक्ट का। जो आपका सबसे टफ एरिया होता है डिसीजन मेकिंग का, जो T2 ट्यूमर्स होते हैं या जिनमें नोड पॉजिटिव ट्यूमर्स होते हैं या ग्रेड 3 ट्यूमर्स होते हैं जिसमें आपको एक टूल की जरूरत है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें Canassist रिस्क जो है उसके हजार्ड रेशियोज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। जबकि आप देखेंगे वेदर इट इज प्रेडिक्ट और वेदर इट इज एनपीआई, उसके जो हजार्ड रेशियोज जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो वो आपको हेल्प नहीं करते हैं उन एरियाज में जहां पे आपको हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात, जो एनपीआई और प्रेडिक्ट जो है डिफरेंट एथनिसिटीज में डिफरेंटली बिहेव करता है। जो Canassist ब्रेस्ट है, whether it is India or European population, what we are seeing is proportions काफी सिमिलर ही हैं। 68% ऑफ पेशेंट्स को लो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा है, 77% ऑफ पेशेंट्स को हाई रिस्क लो रिस्क करके आइडेंटिफाई कर रहा है यूरोपियन या यूएस के पेशेंट्स में। जबकि एनपीआई इज identifying only 11% of the patients as high risk in the Indian patients as against 50-55 in the European or the US cohorts. Predict जो है it's identifying 35, which is almost half of the amount of patients which are being identified as low risk in the European or US population. So Canassist risk दिखाता है कि it is beyond the influence of racial, ethnic differences and clinical parameters because of the fact that इसमें जो biomarkers हैं वो क्लिनिकल जो ट्यूमर एग्रेसिवनेस है उसको अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं। और ल्यूमिनल एबी के बारे में भी बात हुआ, ल्यूमिनल एबी कंपैरिजन भी हमने किया, काफी पॉपुलर है, बहुत सारे क्लिनिशियंस इसको यूज करते हैं। ल्यूमिनल एबी इज कंसिडर्ड एज द बेटर रिस्क कैटेगरी। इनमें if you see this cohort of patients was analyzed, 31% of the patients को ल्यूमिनल ए करके बताया है, उनका सर्वाइवल जो है इम्प्रूव है 96%, ल्यूमिनल बे अराउंड 70% ऑफ द पेशेंट्स है, इनका पूरा सर्वाइवल है 90%। सेम पेशेंट्स को जब हम Canassist ब्रेस्ट से टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोपोर्शंस भी डिफरेंट है। ज्यादा पेशेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एज लो रिस्क 75%, उनका सर्वाइवल भी सिमिलर है 95%, जबकि हाई रिस्क जो 25% ऑफ द पेशेंट्स हैं उनका सर्वाइवल मच पुअरर है। आप सर्वाइवल बेनिफिट में देखेंगे 6% वर्सेस almost 13%, it's almost double. So it shows that it's a much better tool than luminal AB subtype classification.
फिर अभी हम आएंगे सारे कैनासिस्ट ब्रेस्ट को हम कुछ मल्टी जीन टेस्ट के साथ जो हमने कंपैरिजन अवेलेबल हैं वो मैं शेयर करूंगी। ऑन्कोटाइप डीएक्स, इन सब टेस्ट के बारे में डॉक्टर मित्तल ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी इनके बारे में। ये 21 जीन ऐसे जो है इसका जो वैलिडेशन है एनएसए बीपी 14 और 20 ट्रायल्स प्राइमरीली नोड नेगेटिव पेशेंट्स में हुआ था, फिर स्वॉग और ट्रांस अटैक कोहॉर्ट्स में हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेलर एक्स ट्रायल का डाटा। टेलर एक्स ट्रायल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायल, बहुत बड़ा ट्रायल है, ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट्स है, ऑलमोस्ट 9-10 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कवर करता है। सो इट प्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज्ड ट्रायल है। सो उसमें दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑन्कोटाइप डीएक्स। बट उसमें भी जो पोस्ट ऑक एनालिसिस कैथी एल्वेन एट ऑल ने पब्लिश किया था, उन्होंने उसमें बताया कि ब्लैक एंड नॉन हिस्पैनिक वुमेन हैव वर्स disease free survival, overall survival and distance recurrence free interval when you compare them with white and Hispanic. Same way in that risk recurrence score category of 11 to 25%, black and non-Hispanics have much higher hazard ratios. So it shows that in these other populations, oncotype DX is not working in the similar way. So with this in mind, we wanted to see कि हमारा टूल कैसे कैनासिस्ट oncotype DX के साथ कंपेयर करता है. So we did a head-to-head comparison of these patients. इसमें हमने देखा कि कैनासिस्ट ब्रेस्ट का लो रिस्क कैटेगरी में 83% concordance है, which is a very good concordance in the various subtypes. Sharing some data from that, these are the same patient. Canassist breast identified 83% of the cohort as low risk. Oncotype identified 90% of the patients as low risk. When we look at the same patients who are identified as low risk, both by CAB and ODX, what we see is a 83% concordance. Now this is very important. 83% concordance बहुत अच्छा है. मैं आपको बाद में थोड़ा ऑप्टिमल प्रिलिम ट्रायल के बारे में बताऊंगी. फिर आप देखेंगे कि 83% is a real good concordance. और हमारा नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज भी बहुत ही कंपैरेबल है ओडीएक्स के साथ. और एंड एज वी हैव मेंशन्ड ऑलरेडी, इट्स एट फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ दैट ऑफ oncotype DX, and it's a made in India test. Coming to mama print, mama print is a 70 gene signature. It was developed initially in Europe. Transbase और raster trials में उनको हाँ उनको कंपेयर किया गया था. FDA अप्रूव्ड है. इसमें बाद में प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन भी हुआ है. ये these are the advantages. It's a prospectively validated test. But mama print also performs very differently in Asian versus in European patients. So there is this publication data which is available from Japan, which is issued to be et al. इसमें वो बताता है कि 80% ऑफ द पेशेंट्स को हाई रिस्क करके आइडेंटिफाई करता है. जबकि आप देखेंगे जो भी यूएस या यूरोप से जो भी प्रिंट की पब्लिकेशन डाटा अवेलेबल है, द टिपिकल प्रोपोर्शंस आर अराउंड 60 to 40. 60% of the patients are getting identified as low risk and 40% are getting identified as high risk. Whereas these proportions are very different when it comes to Asian patients. Japanese में 80-20 का आसपास है, कोरियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 85-15 के आसपास है. So the proportions बहुत ही different है. So ये इसमें all these publications raised doubts whether recalibration of cutoffs is required or there are any gene disparities between Asian and European women because of which these are not working in a similar manner. So ये जो हमारा हेड टू हेड कैनासिस्ट और मामा प्रिंट का कंपैरिजन है, 67% ऑफ द पेशेंट जो है हमारे कैनासिस्ट ब्रेस्ट से लो रिस्क करके आइडेंटिफाई हुए. मामा प्रिंट आइडेंटिफाइड 55% ऑफ द पेशेंट्स एज लो रिस्क. एंड व्हेन वी कंपेयर द सेम नंबर ऑफ केसेस that mama print and Canassist both are identified as low risk, there is a 85% concordance between the low risk category. Now this low risk category concordance is very important because इसके बेसिस पे आप पेशेंट को कीमोथेरेपी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. So actually एंडोप्रेडिक्टर प्रोसिग्ना के
बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी. ये जो endometriosis है 12 जीन सिग्नेचर, इट इज अवेलेबल इन यूरोप. मोस्टली पोस्टमेनोपॉजल वुमेन पे वैलिडेशन हुआ है. इसका कोई प्रोस्पेक्टिव डाटा अवेलेबल नहीं है अब तक. सेम विद प्रोसिग्ना जो 50 जीन सिग्नेचर है, इसको वैलिडेशन भी अगेन पोस्टमेनोपॉजल कोहॉर्ट्स पे हुआ है. इट इज FDA अप्रूव्ड फॉर पोस्टमेनोपॉजल वुमेन, बट इनका जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के डाटा है अभी तक अवेलेबल नहीं है. सो हमारे क्या गैप्स एंड बैरियर्स है? फर्स्टली, ये सारे जो वेस्टर्न टेस्ट है ये मोस्टली वैलिडेटेड है लार्जली ऑन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन. यंगर एज ग्रुप्स और एशियन ग्रुप्स ज्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है. एंड हम बाद में देखेंगे ऑप्टिमा प्रेजेंटाइल का एक स्लाइड मैंने इंक्लूड किया है, बताऊंगी. डिफरेंट टेस्ट के बीच में भी काफी कंकॉर्डेंस की कमी है. कॉस्ट मतलब जैसे डॉक्टर मित्तल ने मेंशन किया था, ऑन्कोटाइप DX is around 3 lakhs. All these tests are quite expensive. हमारा टेस्ट जो उसके फ्रैक्शन की कॉस्ट में है. एंड if you see the negative predictive values and all are very comparable. So coming to Optima Prelental, this is one in which Oncotype DX was compared against many different tools, which is Prosigna, MamaPrint, MamaTyper, conventional IHC4, Blueprint. ये सबसे compare हुआ. And what they saw is only around 40% of the patients में risk category was same. So there is only modest agreement. Now when you see this in the light of what I showed you, that 83-85% concordance in the low risk category, now you will realize that that is a very good concordance. So here अभी तक का जो भी डाटा मैंने आपको पेशेंट्स का शेयर किया वो सब survival up to 5 years तक का था. I'm very excited to share this data, which is very fresh data. It is from a prospective randomized team trial. Team trial was a tamoxifen exemestane adjuvant multinational trial. It's a large multi-country prospective randomized trial from 9 countries. और इन पेशेंट्स का 12 years से ज्यादा फॉलोअप ऑफ आउटकम्स है. रैंडमाइजेशन जो था इनमें पेशेंट्स का यूज ऑफ हार्मोन थेरेपी के लिए था. वेदर पेशेंट शुड रिसीव सीक्वेंशियल tamoxifen फॉलोड बाय एक्सेमिस्टेन और रिसीव डायरेक्टली 5 years of एक्सेमिस्टेन. 480 पेशेंट्स का स्टडी हुआ. दिस इज फ्रॉम लाइडेन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर नेदरलैंड्स. हमको पेशेंट्स का ब्लॉक्स हुआ. एंड वी वर आल्सो वेरी क्यूरियस टू सी हाउ दिस कोहॉर्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट कोहॉर्ट फ्रॉम द एशियन cohorts that we see. This is a primarily a postmenopausal node positive cohort, and all these patients had received treatment only with hormonal therapy. So just in a nutshell में जो आपको बोलूंगी, जो 10 years का जो डाटा है वो भी हमको बहुत effectively दिखाता है कि Canassist breast is able to identify these patients in a statistically significant manner, and there is a lot of survival difference in the patients who are identified as Canassist breast low risk at 69% survival at 10 years as against 86% survival at 10 years in the low risk patients. Same way it works effectively in both the arms also. So how is Canassist breast helping our patients? Canassist breast has been prescribed by over 300 doctors in 40 cities in India, Turkey, UAE, Sri Lanka, Bangladesh. And हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उसमें से 71% ऑफ द पेशेंट्स को लो रिस्क बताया गया है. वी हैव प्राइवेट इंश्योरेंस रीएम्बर्समेंट, ऑल्सो पब्लिक रीएम्बर्समेंट इज ऑल्सो अवेलेबल. हमारा स्टाफ जो है बहुत हेल्प करता है. आपको आपके कोई भी पेशेंट को इंश्योरेंस क्लेम करना है तो उसके लिए हमारा टीम जो है हेल्प करने के लिए रेडी है. और अभी मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ स्टोरीज. ये जो है ये रियल पेशेंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट ईयर पे आए थे. फर्स्ट पेशेंट है Mrinal. शी इज अ यंग लेडी, 31 year old, recently married, who wanted to have a baby. She was diagnosed with stage 2 breast cancer, grade 2, with high Ki67 ERPR positive. Second patient is a 36-year-old young lady. Again, patient was not willing to take chemotherapy. Again, stage 2 breast cancer with T2N0, 16% Ki67 ERPR positive. The last patient is an elderly patient. Again, not very sure about taking chemotherapy. Grade 3 patient है, Ki67 भी high है, ERPR भी 8/5 एल्डेड स्कोर है. सो दीज आर बेसिकली ये हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं. जो पहला पेशेंट मैंने जो आपको बताया, इस पेशेंट को बिकॉज ऑफ द fact that the patient was very keen to have a baby, the doctor decided to recommended the use of Canassist breast. Now Canassist breast categorized this patient as low risk. Typically, otherwise, this kind of patient would have to have multimodal type of treatment, surgery, radiotherapy, chemotherapy, endocrine therapy, सब कुछ देना पड़ता. पेशेंट को फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते थे पोस्ट कीमोथेरेपी, और डिले भी होता है एंडोक्राइन थेरेपी स्टार्ट करने में. नाउ एज दिस पेशेंट वाज
low risk, the doctor went ahead and skipped the chemotherapy. पेशेंट को टाइम दिया गया टू प्लान अ प्रेगनेंसी, उसने बेबी को डिलीवर किया, उसके बाद उसको एंडोक्राइन थेरेपी पे डाला. ये पेशेंट का ऑलरेडी 5 years कंप्लीट हो चुका है, पेशेंट बिल्कुल बढ़िया है. दूसरा जो पेशेंट है, ये जो है 36-year-old लेडी है, पेशेंट अगेन कीमोथेरेपी लेने पे बहुत कीन नहीं था. उसका एज कंसिडर करके अगेन इस पेशेंट को भी मल्टीमोडल ट्रीटमेंट का अच्छा कैंडिडेट माना जाता, बट डॉक्टर्स ने कैनासिस्ट ब्रेस्ट रेकमेंड किया. पेशेंट लो रिस्क पे था, पेशेंट को मतलब आप उसके चॉइस के हिसाब से कीमोथेरेपी स्किप करने का मौका मिला, पेशेंट को एंडोक्राइन थेरेपी मिला, और पेशेंट का 5 year फॉलोअप पे भी पेशेंट बहुत अच्छे से है. This elderly lady again, ये भी बहुत hesitant थी कीमोथेरेपी because of again age and some other factors. इस पेशेंट को भी मल्टीमोडल ट्रीटमेंट मिलता गई, 3 डिसीज था, बट ये पेशेंट अगेन कैनासिस्ट ब्रेस्ट करने पे लो रिस्क का, पेशेंट को सेफली कीमोथेरेपी स्किप करने का मौका मिला, और पेशेंट एंडोक्राइन थेरेपी पे अच्छा बिहेव कर रहा है. And here I would just like to take you through briefly to the process of the Canassist breast. Dr. Shudhi had mentioned कि मैं आपको बताऊं कि क्या है लैबोरेटरी में, क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, तो मैं उसके बारे में बहुत ब्रीफली मेंशन करूंगी. ये हमारा वर्क फ्लो, सैंपल रिसीव होता है, फिर हम सेक्शन करते हैं, एचएनई पे देखते हैं कि सफिशिएंट ट्यूमर है कि नहीं टेस्टिंग के लिए. उसके बाद में हम उसको कैनासिस्ट ब्रेस्ट बायोमार्कर के टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं. कैनासिस्ट ब्रेस्ट बायोमार्कर्स भी हमेशा नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स के साथ रन होते हैं, और जब कंट्रोल स्लाइड एक्सेप्टेबल होते हैं तभी एक्चुअली टेस्ट केसेस को इवेल्युएट करते हैं. उसके बाद एचसी स्कोरिंग होता है बाय ट्रेन्ड ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट. अगेन जैसे कोई भी बायोमार्कर होता है उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनको पता होगा, जैसे PDL1 है, कुछ भी है. अब अनलेस यू आर ट्रेन्ड इन दैट मॉड्यूल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दोस केसेस. So proper trained pathologists interpret, then prediction happens, report generation, and the dispatch of the report happens. Coming to the patient eligibility, हमारा जो inclusion criteria that includes patients with invasive breast carcinoma who are hormone receptor positive, they should be HER2 negative and up to T3 tumor size, or up to 3 node positive, which is early breast cancer stage 1 and 2 or 3A. एंड एक्सक्लूजन जो होता है, इसमें जो पेशेंट को सिर्फ DCIS है, या जिनको ऑलरेडी न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी मिल चुका है, या जिनके मोर देन 3 नोड्स पॉजिटिव है, या जो हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव हो, या HER2 न्यू पॉजिटिव हो, ये पेशेंट्स को हम कैनासिस्ट ब्रेस्ट टेस्टिंग के लिए नहीं ले सकते हैं. HNE रिव्यू, जस्ट टू इंटरेस्ट द पैथोलॉजिस्ट इन द ऑडियंस, इसमें जो हम ट्यूमर कंटेंट देखते हैं, साथ में देखते हैं कि कुछ और नेक्रोसिस, स्क्लेरोसिस या कोई और इंटरफेयरिंग फीचर्स हैं क्या. फिर हम एक्यूरेटली ट्यूमर कंटेंट आइडेंटिफाई करते हैं, हम इंटरनल कंट्रोलर DCIS एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं. बहुत सारे ब्लॉक्स जब सबमिट होते हैं तो सबसे अच्छा ब्लॉक्स भी हम सेलेक्ट करते हैं टेस्टिंग के लिए. एंड दिस because I am a pathologist myself, I like to emphasize the fixation, importance of fixation in any test. Prompt fixation is very, very important. That is cold ischemia time, that is less than 1 hour of surgical resection. We need to put the sample in the 10% neutral buffer formalin, and कितने देर तक फिक्स करना है, 6 to 72 hours. और इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट द कोल्ड इश्कीमिया फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव टाइमिंग, एंड व्हाट इज द फिक्सेटिव यूज्ड इन द TRF. This will help us to get good results. And this was the case that has already been discussed. ये सारे बायोमार्कर्स का representative pictures है, ये रिपोर्ट है जो उनका कैनासिस्ट ब्रेस्ट रिस्क स्कोर था इस पेशेंट का 11.2 था, with 6% probability of distant recurrence. So this patient is a low risk of recurrence. This would help you to choose the most suitable treatment option. You can see all the clinical factors of the patient and add the information that you're getting from Canassist breast and make the right decision. There has been decision impact study भी हमारा publish हुआ है इंडियन सिनेरियो में. इसमें बताया है कि जो patients हैं, almost 88% of the patients जो हैं, जो भी कैनासिस्ट ब्रेस्ट के रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ट्रीट हुए हैं. और प्रैक्टिकल कंसेंसस रिकमेंडेशंस फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिस्क वर्सेस बेनिफिट ऑफ कीमोथेरेपी, इसका एक कंसेंसस गाइडलाइंस है. इसमें भी बहुत सारे प्रोमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया है कि कैनासिस्ट ब्रेस्ट इज अ टेस्ट व्हिच हैज वैलिडेशन ऑन इंडियन पॉपुलेशन, and they have recommended following the treatment guidelines based on Canassist breast.
बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बहुत प्रोमिनेंट मीडिया बाइट्स भी दिए हैं और दे हैव आइडेंटिफाइड कैनासिस ब्रेस्ट एज अ ट्रीटमेंट tool which helps them to treat their patients better. बहुत सारे एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी हमारे टेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट फोरम्स में और मीडिया बाइट्स में मेंशन किया है कि उनके पेशेंट मैनेजमेंट में कितना हेल्पफुल है टेस्ट. Turkey के oncologist ने भी same way they have given testimonials and said that they are finding it a very useful test in managing their patients also. Lot of ace oncologists have spoken about Canassist breast in very important. ਮੈਨੂੰ ਦਸਕੇ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ at various national ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ various national conferences. Dr. B.K. Smriti from Bombay Hospital and Leelavati Hospital spoke at Best of ASCO in 2022. Dr. Govind Madhu spoke at HCG Bangalore at SNPOCon. Dr. SVS Dev spoke at APSICon and Dr. Bapna also spoke at NatCon. So why choose Canassist breast? पहली बात, it is validated on Asian younger patients. इसका multi-country validation भी है, affordable innovation है, 4 to 5 times lesser than that competitors है. और इसके कोर पे जो है ML-based technology है and this is practically the only test which has got potential for drug development. So जो biomarkers इस test में use होते हैं उनको हम potentially we can try. We are in Dr. Manjari is very keen that these be included in to try to develop drugs which will target those biomarkers and they can be useful in the Canassist breast high risk patients. We are a very quality driven lab. We have ISO 13485 CAP and NABL accreditation and we have one of the fastest turnaround times in this category of 7 to 8 days. So to summarize, I'll say that Canassist breast is a robust and cost effective IHC based prognostic test and it has shown that Canassist stratification is independent of cohort specific differences age and node status and chemotherapy benefit जो है हमने प्रूव किया है कि सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट्स में ही है. More than 83% concordance है. Canassist breast low risk and mama type DX and mama print and oncotype DX low risk categories में and Canassist breast is more accurate than KI67 luminal AB and IHC4 based stratifications. So it helps prevent both the under and over treatment of patients. और अब तक का जो डाटा वो दिखाता है कि 71% of the patients जो हैं they have been able to save themselves from chemotherapy in a prospective manner and the patients treated based on Canassist have shown excellent outcomes in the post 5-year follow-up so far. And now with the teen trial data that I shared with you, we have shown that Canassist breast can predict 10-year recurrence in also. Thus, Canassist breast is a solution to our problems which are different from that of the West. ये हमारे सारे publications हैं. मेरा email ID भी मैं share करूँगी. किसी को भी चाहिए तो I will be very happy to share the publications. And I'm very happy to share Canassist breast and under Dr. Manjari's vision and leadership बहुत सारे awards मिले हैं हमको. बहुत अच्छा recognize किया गया है. ये सारे various awards हैं जो मिले हैं. And big thank you from all of us at OncoStem. I'm really grateful to you all for such a patient listening. Yeah. Thank you very much, ma'am. Yes. I'm going to stop share. Thank you very much, Dr. Savita. It was an eye-opening presentation. Lot many things we have learned from you. I think Dr. Nidhi has a question for you. So Sure. Dr. Mention, I'm happy to answer any question. Yeah. So we have other questions also, but Dr. Nidhi has posted one question. So I request Dr. Nidhi, if you want to ask your question directly, you can directly ask, ma'am. Dr. Nidhi, are you able Thank you for having me on Brendos. And I want to. Yeah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Dr. Nidhi, I understood your question. So I will okay. take you back to that slide 1 second.
Give me a second. तो when you see this, ये जो मैंने आपको बताया, जो कीमोथेरेपी बेनिफिट के बारे में मैंने बताया था ना आपको, सॉरी, तो कीमोथेरेपी बेनिफिट जो आप मैं बता रही हूँ, सारे जो पेशेंट्स हैं जिनको मैं जिन पे कैनासिस ब्रेस्ट टेस्टिंग हुआ है, उनको जब हम व्हेन दे आर कॉल्ड एज लो रिस्क, उसको जो भी ट्रीटमेंट मिलता है, भले उसको पेशेंट को कीमोथेरेपी मिला है या एंडोक्राइन थेरेपी मिला है, सर्वाइवल सिमिलर ही है लो रिस्क पेशेंट में। जबकि जो हाई रिस्क पेशेंट, अब ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, सो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि पेशेंट्स को हाई रिस्क लो रिस्क है। सो वेदर द पेशेंट रिसीव्ड कीमोथेरेपी और कीमोएंडोक्राइन थेरेपी वाज, आई डोंट नो व्हाट फैक्टर्स इट वाज गाइडेड ऑन, बट जब कैनासिस ब्रेस्ट ने उस पेशेंट्स को हाई रिस्क करके आइडेंटिफाई किया और उन पेशेंट्स में यदि फॉर वट एवर रीजन कीमोथेरेपी वाज नॉट गिवन, the survival was poorer in that subset of patients. So that is what helps us to show that there is a chemotherapy benefit. I hope that explains what I'm saying. Yeah, this slide was quite clear, and it explains that obviously Canassist was helping to sort out the low risk and the high risk patient and who need chemotherapy or not. But the first slide that contained the data, when the data when all of the data started, I got it. that was a bit confusing. Yeah, okay, I got it. It's this. Where it showed the chemotherapy and the endocrine therapy. Yeah. So हमने जो क्या किया, we looked at all the data of all the patients that we have seen so far. So I mean, there is a subset of patients who received chemoendocrine therapy because these are retrospective studies. किन पेशेंट्स को कीमोएंडोक्राइन थेरेपी मिला है, किन पेशेंट्स को सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी मिला है, किस रीजन से मिला है हमको नहीं पता। पहले तो वैसे भी जैसे उन्होंने बोला था, पहले ब्लैंकेट ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट था, सभी जो भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है सबको कीमोथेरेपी दिया ही जाता था। और जो एंडोक्राइन थेरेपी जो है बहुत ही क्लिनिकली आपको लो लगा या कोई कोमॉर्बिडिटी से या पेशेंट नहीं मिली है, तो वो पेशेंट्स है जिसमें कि आपको एंडोक्राइन थेरेपी शायद नहीं दिया होगा, अब वो जिस भी रीजन की वजह से हो। बट यदि आप कीमोएंडोक्राइन थेरेपी जो पेशेंट लिया है उसमें हम देख रहे हैं 70-30 के प्रोपोर्शन में पेशेंट्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं हाई रिस्क और लो रिस्क में, सर्वाइवल में भी काफी डिफरेंस है। बट यदि आपको ये ग्राफ देख के लग रहा है कि हाँ इन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी मिला है, हो सकता है कीमोथेरेपी की वजह से ही ये हमको डिफरेंस मिल रहा है। सो दैट इज नॉट द केस, दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग एट द पेशेंट्स हु रिसीव ओनली एंडोक्राइन थेरेपी। नाउ बिकॉज इट्स रेट्रोस्पेक्टिव, आई डू नॉट नो किस रीजन से इनको एंडोक्राइन थेरेपी ही मिला, मे बी उनको क्लिनिकली लो रिस्क माना गया इसलिए उनको एंडोक्राइन थेरेपी मिला। बट इन पेशेंट्स में भी एक 19% ऑफ द पेशेंट्स है जिनको हाई रिस्क करके कैनासिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनका पुअरर सर्वाइवल है एट 84%. I hope that explains. That explains, but actually what is coming up to my mind again and again is when the first graph, when they were they received chemotherapy, even if they Canassist identified them as high risk and they would have received chemotherapy, and in the next graph it showed that the survival rate was around 94% in these patients with high risk, identified as high risk, and they received chemotherapy, but it is not reflecting on this graph. That's confusing me. No, does that make sense? Yeah, I know, because this is a retrospective study, ma'am. This is not a prospective study, so the decision making was not made on basis of Canassist test. These are all part of the various studies that we have done, so this is a retrospective study. So I hope that explains what you are saying. See, I'll just put it, Dr. Nidhi. See, Canassist today is a prognostic test. In terms of prediction, it is still not validated for predictive value. So what they have shown is that in a patient who is having a low score, that patient will do better as compared to a person with a high risk score. So this patient who required chemotherapy also, but if that patient had a low score, that patient did better. Patients who received only endocrine therapy, again, thinking the clinician thought that that's all required. In that scenario also, patients who did well were those with a low risk. So it is just a graph. It is not saying that you have to treat it like that. It's just a simple graph. Absolutely. What it means is
that basically if you are a low risk patient identified, you're going to do better whatever treatment you are taking, whatever is, it is not a predictive value. It is not telling you that you have to give chemotherapy or hormone therapy to this patient. No, it's just telling you the prognostic value, that prognosis can be evaluated with this. So that is something we need to understand. Canassist still is a prognostic tool. It is not a predictive tool, and Absolutely. therefore, as I was telling Dr. Sudhi, see, even for the Oncotype DX, it is just the last year where they have made a statement that in node positive patients, you can use in certain scenario. But we talk about any other test, including Prosigna, or I think Endopredict is using for N positive, but even Prosigna, for all N1, they are not using it to tell whether you should have chemotherapy or not. So, from my point of view, if I am using Canassist today, I should only be using it in a patient who is N0, except if it is, if everything is otherwise very well, the case of 5%, everything, and only N1 positive without ENE. If you have a ENE, this relative risk goes up to 2.23 in both mortality and recurrence, as compared to a person who is N1 but no ENE. So just having a ENE increases the risk, doubles the risk of mortality. So when you have a patient like that, this patient should not be given the option of avoiding the chemotherapy. This is what I meant. And I think Canassist will have to do a little more prospective studies to basically have the predictive value. Prognostic value is good. And Absolutely. therefore, for me, I would use it in a patient who is N0 instead of Oncotype DX. And I would use it. So this is what I'm saying. I mean, for this patient, I would still advise you to go ahead with chemotherapy. This has a high risk patient with a ENE positive, and when you have a high risk patient, should not, you should not be sending it to interpret. What they are telling is their risk ratio, which doesn't include the ENE. ENE is not part of any of the essays. Even now, even with Canassist, it is not a part of the essays. But a separate studies that have been done on ENE by various doctors have shown that ENE has a double risk of mortality and local recurrence. So we should not be asking for. This is all I was wanting to say. Yes, I mean, here I'd just like to add one point, sir. Actually, Canassist breast is, predicts the risk of distant recurrence. Nothing about local recurrence or use of radiotherapy. That is one question which gets asked. So I'm just clarifying. Local recurrence की हम बात ही नहीं कर रहे हैं. जो हम मार्कर्स यूज कर रहे हैं और जो हमारा टेस्ट भी है वो पूरा डिस्टेंस रिकरेंस के लिए है, क्योंकि कीमोथेरेपी हम लार्जली सिस्टमिक जो प्रॉब्लम्स है उससे बचने के लिए ही देते हैं. जो आपका लोकल ट्रीटमेंट होता है लार्जली, जैसे अपने रेडियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर अग्रवाल उन्होंने बात किया, लोकल ट्रीटमेंट इज बाय रेडियोथेरेपी एंड फर्स्ट प्राइमरीली बाय सर्जरी, then followed by radiotherapy. That is the local treatment actually. That is done. Yeah, but I'm talking about 2.2 is the RR in mortality in ENE. So mortality would be a different thing altogether. And therefore, if you know that you have high risk factors, we should actually avoid getting these things, because there's a lot of other confabulating factors which still need to be done. This is all I wanted to say. Sir, Okay. as what like Let's get back to you more on that. It's a very interesting and good point. I'll come back to you with more data on that, because actually, as far as it's considered as early node with N1, all the tests they are validated in N1 category. Though, as you said Absolutely. very rightly, ये नहीं Absolutely. तो अलग से examine किसी भी test में नहीं. नहीं किया है. So because normally if you have a single node with ENE, you expect more nodes to be positive. It's very unlikely normally that you have an ENE and you have only one node positive. So this is not a very common circumstance where with the ENE you have only one node positive. So, but actually, people who have done it have said if ENE is there, it becomes high risk. So that is still in. Actually, there are two sort of concerns in breast cancer. Recurrences are of two types: systemic recurrence and the local recurrence. We know that to control the local disease, we sort to surgery and radiotherapy. So, for the lymph node, whether they are positive or not positive, whether they are single lymph node enlargement, more than 3 lymph nodes positive, or extranodal invasion, all these things we usually then we consider radiation therapy. For systemic therapy, whether we have any risk of getting systemic recurrence or not, for that we resort to usually chemotherapy.
So for Canassist or for any other recurrence risk prediction assessment tools, the main concern is whether this patient requires systemic therapy. Because why do we give systemic therapy? In order to prevent the systemic recurrence, matlab systemic circulating cells. So for the local radiation therapy, because like this test is now in practical application for last few years only, so it is still in the process, like the general clinicians, oncosurgeons like us, now that we are now using it routinely. अभी जो हम लोग अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, दैट इज कि अगर ER पॉजिटिव हार्टिन डिजीज है, लो रिस्क डिजीज है, तो यूजली वी नाउ see whether we really need to give chemotherapy or not, or we can skip it. Secondly, for if the lymph nodes are positive or not, for that, for local control, because anyhow we have removed the lymph nodes, axillary dissection is completely done, almost completely done. So for local control we go for radiation therapy. And I think giving a final verdict may not be right at this point in time, because we have very initial results, initial personal results. Maybe with time we will be more intelligent to see whether, because the morbidity of chemotherapy is really very, very much, and the cost is also. So whether we can skip chemotherapy in certain subset of patient would be very interesting to see, especially in our scenario. So I think for if the patient has a lymph node positive, then even whether it is extranodal or whatsoever, radiation therapy can very well control the disease in the No, axilla. that is fine, Dr. Sudhi. But as far as concern is concerned, all over the world, So, if but we have my node positive, question is, suppose the patient has extranodal extension. So why we yeah. are concerned? What is our actual concern? Is it the local recurrence or See, the systemic no, recurrence? no. It's systemic recurrence. Systemic recurrence. For the systemic Yeah. recurrence, like anyhow we have tested the tumor profile with these 5 markers, so we know that the I know. patient has a very low I know, risk but of but it local is still not recurrence. validated as predictive marker for these patients. It is a prognostic marker. Yeah. The only predictive marker right now is oncotype DX. That's it. So, but what The only predictive marker. feel, Also but not perfect, that related is in the Indian population. So, Yeah. I mean, that way, if you look at it like that, in Indian population, oncotype DX, we don't have any prospective studies. No, Whatever that is, there is absolutely. from West. I think you have already shown that both for the Caucasians and Indian, it is almost similar. So Yes, if we, that is Canassist plus. so that would mean for that also it is almost similar. I mean, you can't have just one way. What I would just want to say is that at least for the general public who is there, go for Canassist or Oncotype right now only for patients who are N0. This is all I want to say. Because a patient who has a MET later on, you will never be able to cure that patient. It is better to have a little over treatment for a patient who has node positive till we have further validation of most of the things. So that is all I want to say. Let us not, I mean, it's not a personal thing, anything. I would say that most of the oncologists around India and the globe, even now, would prefer to give chemotherapy, even if just 4 cycles, maybe not 6 or 8 cycles, but at least 4 cycles of AC or TC in such a scenario where N is positive, even if the other thing is negative. That is what the general consensus today among oncologists in India is. Of course, I would really love that, like Oncotype DX, if Canassist can have much more studies We are working on, on that, sir. We are working and on that. especially, Yeah. I would say like this patient, you should actually try to enter the ENA or the LVIs in Yes, your. we are following up and we make a note of all the extra comments and all. We do keep in our records all the extra. I know. So and we are maybe you following should. up all the patients also. Yeah. So maybe We're you should very come out actively with following up. It's a very some important part of statistics. our work. Yes, sir. You Yes, come sir. up with some statistics where when the ENA was positive, even if the other thing was because your low risk does not take into account the ENE or the LVI. These 2 things will never be included in your subset of things. So I think you should try to do that in some patients and see that patients who, in spite of a low risk, did badly, maybe that was a reason. So maybe that is something for the. Yeah, what you're saying is correct. Actually, we are, when we are doing the follow-up data, as part of our data collection, we note all these extra points actually. Yeah. We are following up all the patients. So the thing is, as you said, with time we'll build up more data. I mean, nothing, all this takes time. All these are clinical outcomes which needs to be built up over the years. So we will have more data as
with every passing year, we have more and more data. So we are Absolutely. working very actively on that. Yeah. What you have suggested is also one of the things we are already doing. And with your suggestion, we'll take it into more and we'll look at this data separately also. That's a very great idea. Thank you so much. And Dr. Sudhi, I would just say that you make a statement that for right now, don't go for any of these tests for node negative, for node positive. For node negative, Canassist in a luminal early breast cancer is definitely a good option. That is what I would put it as. Thank you very much, sir, for your comments. One thing I would like to ask you, Dr. Savita, suppose a patient, I am thinking of asking of prescribing this test, Canassist. So, what should I tell the patient? What is the chance that suppose a test comes negative, like low risk? देन उसका क्या चांस है ट्यूमर के वापस आने का कीमोथेरेपी अगर उसका लो रिस्क भी है तब भी क्या चांस है कि कीमोथेरेपी before you're sending your patient, if you want to say our negative predictive value is around 95, so there is a 5% chance that the patient can have recurrence. 5-year recurrence. 95%, 5%. 95% chance is there that the patient will not have recurrence when it has been called as low risk category. That is what is the negative predictive value of our test. But in every individual case, the probability is given in the test, like in your patient also that was given 6% probability of recurrence for that patient. So based on that, you can make, along with whatever other clinical data, you'll be able to judge better ki what would you prefer, how would you prefer to treat your patient. Okay, so if I can summarize all the presentation what we have discussed, so basically we are all of the opinion that we need a certain tool from where जहाँ से हम समझ सकें कि क्या ब्रेस्ट कैंसर में हम कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं. जो भी टूल्स हैं अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज में है, डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे ऑन्कोटाइप डीएक्स, दीज आर गुड टूल्स बट लाइक बियॉन्ड आर अफोर्डेबिलिटी. Still they are beyond our affordability. They are good tools. Majority are prognostic markers. उनसे हमें prognosis तो पता लग जाएगी कि ये low risk है कि high risk, लेकिन क्या उससे हम कुछ एक लिमिट से ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है. Canassist एक अच्छा टूल है जो मेड इन इंडिया है और इसकी जो सेंसिटिविटी एफिकेसी है, सेंसिटिविटी ये एट पार है विद अदर. तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, कॉकेशियंस हैं या कोई और कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडियन जो सबसेट्स हैं कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं. तो ये मल्टीनेशनल कंट्रीज़ में अप्लाई हो सकता है. जैसे कि अगर ऑन्कोटाइप डीएक्स है तो यूजुअली कॉकेशियंस में या वेस्टर्न जो ब्लैक्स हैं या वाइट्स हैं इनमें है. इंडियंस में इनका अपना डाटा नहीं है, तो अगर हम उसको यहाँ अप्लाई भी करेंगे तो शायद हमें बहुत ही कंपेरेबल रीजनेबल रिजल्ट्स शायद ना मिले अभी. और अफोर्डेबिलिटी इसका पेशेंट कैसे कितना था डॉक्टर सुधी? हाउ वाज द KI67 दिस पेशेंट? जी सर, KI67 कितना था इसका? KI67 कितना? हाँ एक सेकेंड, हम एक बार मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ. I think 15 to 20% बताया था डॉक्टर जानी ने. हाँ सर, it is 15 to 20%. So that is also higher. You know, this is a high KI67. For breast, it automatically becomes a high. So this patient had a lot of poor prognostic features already. Sir, I think it is in the intermediate group, so we are not sure because like अगर intermediate भी No. What I mean to say is that in a patient with node positive, if you have a high KI67, I'm just telling you that in a patient with a KI67 more than 14% with node positive, better to avoid avoiding chemotherapy. This is chemoendocrine therapy would be a better option. Go for chemoendocrine therapy. Go for chemoendocrine therapy. Certainly, so I mean, basically, it's a new thing. We need to keep on learning and doing it. That is why we all are here to learn from the specialist. So because it is a learning. And I just put this patient in my TMH thing. They have agreed. All they say that this patient should receive 4 TC followed by radiation and AI. So that's a statement that even Dr. Badwe has given. I mean, I'm sure that no one is going to argue with Dr. Badwe. I'm so thankful. Fine. And this is the beauty and this is the utility of this forum, because like when we present the case, we get responses from experts and which help us modify our clinical practice in the to benefit the patient more.
So this is how this patient is benefited also, and because of this discussion, and I will certainly consider your advice. Yeah. To give Because her this is at not least. just my advice now. This is the advice of the Yeah, top yeah. person on breast in India, Yes, Dr. sir, Rajan bilkul. Padwe. And Fine. So I think this advice we should arised out of our definitely. discussion, and I'm really thankful Absolutely. for this. Yeah, thank you very Yeah. much, sir. Yeah. Okay. Okay. एंड सो इफ टू कंटिन्यू फर्दर जो हमारा अगर हम इस डिस्कशन को समराइज करें तो ये प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स हैं एकदम से अभी 100% इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं कुछ जो आपने एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया बताया था उस हिसाब से जो नोट पॉजिटिव डिजीज़ है अर्ली नोट पॉजिटिव डिजीज़ उसमें हम कर सकते हैं बट जैसे हमारा डिस्कशन हुआ है हमें इसको अर्ली नोट पॉजिटिव डिजीज़ में भी स्पेशली अगर एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है वी शुड डू विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट विद अ वेरी कॉशन कि दोज आर स्टिल कंसिडर्ड हाई रिस्क दो क्लिनिकली हाई रिस्क स्पेशली विद इंटरमीडिएट काई 67 है ना तो ऐसा नहीं है उनको हो सकता है हल्का कीमोथेरेपी देने का जरूरत पड़े बट इट इज ऑलवेज गुड टू गिव देम सम अमाउंट ऑफ कीमोथेरेपी we should not because we have limited data at present so we should move forward certainly we should move forward but cautiously है ना not blindly and cost we all know कैसे होता है टेस्टिंग कैसे होती है इसके बारे में भी वी हैव डिस्कस्ड and I think so many things the exclusion inclusion criteria किन में करा सकते हैं किन में नहीं कराना चाहिए ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं उसका नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कितना % चांस है कि उसको वापस से रिकरेंस हो सकती है ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस की है एंड आई रिक्वेस्ट एनी वन ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू दे कैन कम अप विद देयर क्वेश्चंस so that we can ask our experts are still with us and if they don't have any question then I may request all the any word they want to tell about our forum our guest faculty the moderators please come forward because that will be very encouraging for encouraging for our team. Okay, so I've seen the chat and right now there is no question and with this I would like to thank all the participants for joining us and the continuous love and support I always get from them. For those who practice the endocrine surgery, I request them to please join us in our next upcoming meet in November. And that will be a delight for the thyroid surgeon because we will be discussing something about the thyroid surgery. Okay, and please do join us in December also because in December again in the breast month we will be discussing about how we can individually customize the systemic therapies in breast cancers. So this will be our upcoming programs and with this I would like to thank you all for your patient joining us and I am very glad for the successful conduct of this program. I am very thankful to Umang sir for giving his precious time. He's so busy and but like as already said I look at him as my elder brother. I always learn from him. I always get his courage from him and I'm very blessed that he found time and accepted my invitation. I'm very thankful to Dr. Savita. Her presentation was really very insightful and eye-opener for us. We learned a lot from her and thank you for giving your precious time. I'm very thankful to my co-speakers, Dr. Chani, Dr. Shweta, Dr. Annie. They are always so proactive and they always give me so much support and love and they always come forward like to help me out. Many times when I am low in my energy, they help me out for everything. Thank you very much. I'm very thankful to Rudra and his team for conducting this, organizing this event. I'm thankful to my IT team for helping me out. And friends, this whole session is recorded and it will be available soon on my YouTube channel. So please stay connected. Thank you very much. Thank you everyone. Good night. So much. Thanks for the invitation. It was a pleasure sharing the platform. Hearty thanks to Dr. Umang Mittal and Dr. Chani Agarwal. Thank you so much. Thank you very much. Now we can Dr. disconnect. Savita. Thank you so much, ma'am. Thank you, Annie.